the topics yesterday, anterior abdominal wall. In continuation with the same, today what we are going to discuss is rectus abdominis muscle. This is the same muscle that you see in our superstars who flaunt their abdomens with 6 packs and 8 packs, and this is the one which is important for the flexion of the trunk anteriorly. So we are going to discuss the rectus abdominis muscle along with the rectus sheath. Now rectus abdominis, rectus sheath can come as a long question. It's a very favorite question often asked in the exam. The diagrams can be asked, it can be asked as a short note also. So pay attention. Rectus abdominis muscle we are going to discuss under the following headings. Number 1, the origin of rectus abdominis muscle. What is the origin of rectus abdominis? The insertion of rectus abdominis muscle. The intersections which are present in the rectus abdominis muscle. Action, nerve supply and blood supply. So let's start going with the origin and insertion of rectus abdominis. The rectus abdominis muscle originates from, in some books it is written it originates from the lower end, in some books it is written it originates from the upper end. Now this is controversial. What we are going with is with some conventional books which say that the origin of rectus abdominis muscle is from lower end. So rectus abdominis originates as 2 slips from the pubic symphysis and the pubic crest. With the diagram. Take it as this is the 7th, 6th and 5th ribs and their respective costal cartilages. The rectus abdominis muscle originates from 2 slips on either side. There are 2 rectus abdominis muscle originating, one on the right and on the left side. They are conjoined in the center. So the rectus abdominis muscle originates from 2 slips. One is this pubic symphysis. And just lateral to the pubic symphysis, there is a crest which is called as the pubic crest. So lower end is narrower. As it goes above and inserts on the 5th, 6th and 7th costal cartilages, it becomes broader. So it originates here, pubic symphysis and laterally pubic crest. Fibers go upwards. You can see that they are fanning out. Here it was narrower. As they go up, it
it becomes broad and it inserts on 5th, 6th, 7th costal cartilage. 5th, 6th, 7th costal cartilages. So we've seen the origin and the insertion of rectus abdominis muscle. Third point that we are about to discuss are the intersections. You can see how long this muscle is. इस xiphoid process से pubic symphysis तक के इतनी लंबी ये muscle है. It's a flat strap-like muscles. Embryologically, when the anterior abdominal wall starts to form, remember that they start forming in myotomes. They are layers of myotomes through which part में शरीर बनता है. There are myotomes, various myotomes through which the body wall starts to form. Now, it is such a big muscle, it is covering many layers of myotomes. तो ये जो intersections या interdigitations हम लोग कहते हैं of the rectus abdominis muscle are nothing but embryologically they are representing different myotomes. तो हमने जो वो 6 packs और 8 packs में हम जो वो brackets देखते हैं ना, those brackets are nothing but the intersections. There are around 4 brackets which are present. This is your umbilicus. So there are around 4 intersections which are present. One is at the level of umbilicus. One is at the level of xiphoid process. One is present midway between xiphoid process and the umbilicus, and few people it is seen between umbilicus and pubic symphysis. Usually there are 3, 1, 2 and 3 intersections. Sometimes you might also find a 4th intersection which is present between the umbilicus and the pubic symphysis. ये intersections क्या हैं? Again I am trying to tell you. What are these intersections? These intersections are nothing but embryonic time पे abdominal wall जो बनती है अलग अलग myotomes से बनती है. तो ये एक एक पार्ट जो हम दिखा रहे हैं ये हो सकता है embryonic life में ये अलग अलग myotomes से हो. So in some books they say that these intersections are nothing but description and division of myotomes. ये important feature है rectus abdominis muscle का. No other muscle in the body you see intersections like this. No other muscle in the body you will find intersections like this. So again quickly, origin from lower down, pubic symphysis and pubic crest. Insertion higher up, 5th, 6th, 7th costal cartilages. नीचे narrow, ऊपर broad. It is fanning out. Third point, intersections. What are intersections? Nothing but myotomes. ये intersections कहाँ present है? Usually 3 जगह present है. At the level of umbilicus, at the level of xiphoid process, in between xiphoid and umbilicus, and sometimes below umbilicus also. But these intersections will be seen in people who are active, not in people who are fatty, because उनके अंदर superficial fascia will be fatty layer. कल हमने देखा था the superficial fascia of the abdomen is divided into 2, membranous the deeper one and superficial fatty layer. So in people who have an athletic body you will be able to find these intersections. Okay, now next coming down to the action. The rectus abdominis muscle is a very important muscle along with the muscles of the posterior abdominal wall. पीछे की जो पैरावर्टिब्रल या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं उनके साथ में रेक्टस एब्डोमिनस मसल इज द वन व्हिच हेल्प्स इन फ्लेक्शन. फ्लेक्शन मतलब आगे झुकना. फ्लेक्शन. दिस इज thorax, this is abdomen, both flexor surfaces, so decreasing the angle between 2 flexor surfaces, this action is called as flexion. So rectus abdominis muscle is very important muscle in performing
flexion of the anterior abdominal wall along with the help of muscles of posterior abdominal wall. Now here we should discuss the actions of oblique muscles. कल हम लोग ने oblique muscles के actions नहीं describe किए थे. Now oblique muscles are important in doing lateral rotation of the trunk, okay? But the main function is दोनों तरफ के जो oblique muscles हैं they always contract and behave synchronously. मतलब right और left side की oblique muscles जो हैं हमेशा साथ में contract या relax करेंगी so that viscera is maintained inside. ऐसा नहीं कि ये वाली दब गई तो यहाँ से विसरल ऑर्गन बाहर आ रहे हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये हमेशा सिंक्रोनसली एक दूसरे के साथ में ड्यूरिंग ब्रीदिंग और इंक्रीजिंग द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ये दोनों साइड की जो फ्लैंक मसल्स हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एंड दे विल आल्सो हेल्प इन लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी. अंडरस्टूड? दीज आर द एक्शंस ऑफ एक्सटर्नल, internal oblique and transversus abdominis, the three muscles that we saw yesterday in the class. Anterolateral abdominal muscles. Rectus abdominis is anterior. Along with these three, this group becomes anterolateral group of anterior abdominal wall. ठीक है? Nerve supply. They are all supplied by lower 6 to 7 thoracic nerves. All these muscles, rectus along with external, internal and transversus abdominis are supplied by lower 6 to 7 thoracic nerves. The blood supply, very easy. If you don't remember something which is very fancy, just remember superior epigastric, inferior epigastric and the lumbar which are coming up. Even if you write down this much, it is enough. Remember superior epigastric, inferior epigastric, some of the fibers of the lumbar area. This is the blood supply of the rectus abdominis and the other anterolateral group of muscles of anterior abdominal wall. Now next we will discuss what is called as the rectus sheath. Now rectus sheath, the next topic that after we do after rectus abdominis muscle is rectus sheath. This often comes as a question in your exam. What is rectus sheath? The rectus sheath is a fibroaponeurotic covering. It's a fibroaponeurotic sheath which is covering majoritarily 95% rectus abdominis muscle and the small vestigial muscle that we spoke about yesterday, pyramidalis. But pyramidalis is absent in around 20% of normal humans. So rectus abdominis is the major muscle that we are going to concentrate about. Rectus sheath is that muscle which covers the rectus abdominis muscle. It's a fibroaponeurotic sheath which covers the rectus abdominis and pyramidalis. Okay? The mode of formation. How does this sheath come? कल हमने देखा था जितनी भी हमने तीनों मसल्स देखी एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, हमने क्या बोला था एक वर्ड, द एपोन्यूरोसिस कम्स इन द मिडलाइन. एंड व्हाट वाज एन एपोन्यूरोसिस? एपोन्यूरोसिस इज अ फ्लैटेंड टेंडन. मैंने बताया था ना, यहाँ पर हम मोटी किसी चीज के साथ में तो कोई इंसर्जन नहीं कर सकते थे. तो हमारा सोचो पेट कैसा होता है, यहाँ उबड़ खाबड़, बट ऐसा नहीं है. यहाँ की मसल्स टेंडन में इंसर्ट होती, मोटा होता है. उसी टेंडन को अगर हम हैमर से बीट कर दें पतला पेज जैसा हो जाएगा, बिकॉज हमारी एब्डोमिनल मसल कैसी है, फ्लैट एकदम. सो ये जितनी भी मसल्स हैं ये सेंटर में लीनिया एल्बा के पास में दे इंटरडिजिटेट, और ये इंटरडिजिटेट करने वाला चीज कौन है, उनका टेंडन. और उनके टेंडन को क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस. तो ये तीनों मसल्स जो हैं एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, इनका जो एपोन्यूरोसिस मिडलाइन में आता है, this is the aponeurosis which forms the rectus sheath. So mode of formation, it is formed by the aponeurosis of internal oblique and transversus abdominis. Now why we have only written internal oblique and transversus abdominis, we have not written external oblique. External oblique की aponeurosis सिर्फ उसके स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती है. इंटरनल ओब्लिक का जो एपोन्यूरोसिस है, एक्चुअली दैट इज द एपोन्यूरोसिस व्हिच स्प्लिट्स इनटू टू एंड एनक्लोजेस द rectus abdominis muscle,
and matches with the other side. Okay, जब हम इसका डायग्राम देखेंगे you will understand better. Extension, रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहाँ से कहाँ तक जा रही है? जिफॉइड प्रोसेस से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, ठीक है। तो रेक्टस शीथ का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन हम डिस्क्राइब करते हैं 3 चीज़ों में। एक जो कोस्टल मार्जिन के ऊपर जहाँ पे रिब्स आ रही हैं, एक कोस्टल मार्जिन से अम्बिलिकस तक, और तीसरा अम्बिलिकस से प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में। So we have described it as above the coastal margin, below, between the coastal margin and the umbilicus, and below the umbilicus. Okay? Let us just concentrate on this diagram right now. This diagram I have tried to show the origin of the insertion of rectus abdominis on the coastal areas, coastal cartilages का cut section है. Here this is pubic symphysis. This is pubic symphysis. So from here origin to insertion. This tract of muscle is rectus abdominis muscle. Okay? अब इसके ऊपर हमको वो rectus sheath form करनी है, तो वो कैसे form? Anteriorly यहाँ से हम आ रहे हैं. This is the skin. ये medial indentation हमने umbilicus के लिए रखा है, क्योंकि umbilicus हम लोगों को एक surface landmark बताएगा कि इसके ऊपर कैसा है और इसके नीचे कैसा है. ये जो हम coastal margin और इसकी बात कर रहे हैं ना, this is what we are going to discuss from this time. Okay. Now let us trace. ये rectus abdominis muscle हमने बना दी. अब इसके बाद anteriorly, ये याद रखना, this is anterior and this is posterior, इस diagram में, ठीक है? After skin, this is the aponeurosis of external oblique muscle. External oblique muscle सिर्फ rectus abdominis muscle के सामने मिलेगी. Xiphoid process से pubic symphysis में पूरी जगह. इसलिए हमने देखो डायग्राम में भी ड्रॉ किया है रेड कलर से. External oblique extending from the xiphoid process to pubic symphysis. Can you see that? This is the aponeurosis. यहाँ मसल नहीं आ रही है, कहीं पर भी याद रखना. This is the aponeurosis of external oblique. Now, most important muscle is internal oblique. Internal oblique का जो aponeurosis है, it bifurcates into two. अब ये bifurcate कहाँ करता है? Lower to the coastal margin. Coastal margin के नीचे internal oblique का जो fiber है, it bifurcates into two. An anterior lamina and a posterior lamina. Anterior lamina and posterior lamina of internal oblique. Important point याद रखने का क्या है? कोस्टल मार्जिन के नीचे शुरू हो रहा है इंटरनल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस. एक्सटर्नल ओब्लिक था उसके ऊपर से ही शुरू हो गया. ध्यान रखना ड्रॉ करते समय. ओके. सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर लैमिना पूरा एंटीरियरली प्रेजेंट है, लेकिन पोस्टीरियर लैमिना देखो हमने अम्बिलिकस के थोड़े से नीचे हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि बिलो द अम्बिलिकस एट अ सर्टेन पॉइंट the posterior lamina of internal oblique will again come in front. So this will join in front. समझ में आया? It will leave here and it will come in front. ये जब हम कट सेक्शन देखेंगे तो और तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान रखो. 3 मसल्स डिस्कस करनी है आपको. एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस. एक्सटर्नल ओब्लिक का सारा फंडा एकदम क्लियर है. It originates, it is anterior to the rectus abdominis muscle, ऊपर से लेके नीचे तक रेड कलर. इंटरनल ओब्लिक जो है it splits into two, लेकिन स्प्लिट कहाँ होगा? कोस्टल मार्जिन के नीचे, लोअर बॉर्डर पे. कोस्टल मार्जिन के लोअर बॉर्डर पे डिवाइड्स into two, an anterior and a posterior lamina. एंटीरियर लैमिना कोस्टल ग्रूव से लेके पूरा नीचे तक, लेकिन पोस्टीरियर लैमिना यहाँ से लेके अम्बिलिकस के थोड़ा सा नीचे तक प्रेजेंट है. उसके बाद में पोस्टीरियर लैमिना आल्सो कम्स इन फ्रंट. तो अम्बिलिकस के नीचे कितनी लेयर्स हो गई? स्किन, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक. समझ में आया? अब तीसरी मसल जो बची दैट इज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस.
अब ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस कोस्टल मार्जिन के ऊपर, दिस इज डायफ्राम. Just behind the diaphragm, we are going to have fascia transversalis. Transversalis is nothing but the covering of transversus abdominis. उसके just पीछे we have peritoneum. Peritoneum is nothing but pleura of abdomen. Pleura था lung की covering, वैसे ही peritoneum is the covering of all the visceral organs of the abdomen. तो ये posterior है.